हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 सेज दैट find the point on the x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. So you have to find a point on the x axis which is equidistant from A. What is A? A is 2, -5. Okay, and B. B is -2, 9. B is -2, 9. 2, -5 and -2, 9. So you have to find a point which is on x axis and which is equidistant from these 2 points. So previously we have discussed that if any point is lying on the x axis, this is your coordinate axis, ये x है और ये y है, ठीक है बच्चों। अब बोला क्या गया है कि हमारा जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करता है कहीं भी। तो बच्चों कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सो लेट आवर point on x axis be x, 0। x, 0 हो गया हमारा पॉइंट x एक्सिस पे। Now according to the condition, this point x, 0, let its named it as p। ये जो पॉइंट p है जो x एक्सिस पे है वो a और b दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। So therefore the distance of p from A will be equal to distance of p from B. So PA square will be equal to PB square. PA square will be equal to PB square. PA is under root x minus 2 whole square plus 0 minus -5 whole square is equal to, what is PB? PB x minus -2, that is x plus 2 whole square plus 0 minus 9 whole square, ठीक है। 0 minus 9 whole square. Now here both side you are having square root, so you can take square on both the side. So if you take square on both the side, this root will get cancelled. Okay, so you will be left with x minus 2 whole square plus 5 square is equal to x plus 2 whole square plus minus 9 square. 0 minus 9 is -9, right? Now let's square them. So x minus 2 whole square will be x square minus 4x plus 4 plus 25. Okay, x plus 2 whole square will be x square plus 4x plus 4 plus 36. Okay, now x square minus 4x plus 29 is equal to x square plus 4x plus 40. Okay, so x square and x square will get cancelled. If you take this 4x on this side, it will be 8x, and take this 40 on this side, it will be 29 minus 40. Okay, okay, so this is 11 minus 11 is equal to 8x. X is equals to minus 11 by 8. So x is equals to minus 11 by 8. X minus 2 whole square plus x plus 2 plus 0 minus 9. Okay, see there is a slight mistake here. Minus 9 square will be 81. Here minus 9 square will be 81. Okay, so you will get 81 plus 4, here you will get 85, right? 85. Now you bring 85 on this side, here it will be 85. Okay, now 85 minus 29, 15 minus 9 6, and 7 minus 56. Minus 56 is 8x, right? So here there was a slight mistake, I have written 36. Here it is, the square of 9 is 81, right? So now x will be minus 56 by 8, that is x is equals to minus 7. X is equals to minus 7. So your coordinate on the x axis will be -7, 0. -7, 0. Done.
So that's all for question number 7. You can take a screenshot. Now let's see next question, question number 8. So students, question number 8 says that find the value of y for which the distance between the point 2, -3 and 10, y is 10 यूनिट्स. तो बच्चों यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके बीच में आपको डिस्टेंस दिया गया है. पॉइंट P is 2, -3. Point P is 2, -3. Point P is 2, -3 and Q is 10, y. Q is 10, y. Now distance between these two point P and Q. Distance between P and Q is 10 units. Distance between P and Q is 10 units. You need to find the coordinate of y. So we know that if the distance between P and Q is 10 units, so you have to apply the distance formula simply. So PQ will be equal to under root. So the distance between PQ will be equal to 2 minus 10. Actually it is x2 minus x1, so you can write 10 minus 2 whole square plus y2 minus y1. So y minus 3 whole square. Okay. So PQ is equals to under root 10 minus 2 is 8 square plus y minus that is y plus 3 whole square. Right. Now the distance between PQ is given 10 units. So at the place of PQ we will put 10. 10 is equals to under root 8 square is 64 plus y plus 3 whole square. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. Now we will take square on both the sides. So 10 square will be equal to under root square. Square and root will get cancelled, and here you will get 10 square, that is 100 is equal to 64 plus y plus 3 whole square. ठीक है. Now you shift the 64 on the other side, so you will get 100 minus 64 is equal to y plus 3 whole square. 100 minus 64 is equal to y plus 3 whole square. 100 minus 64 is 36. So 36 is equals to y plus 3 whole square. 36 is equals to y plus 3 whole square. ठीक है. Now if you shift this square on this side, it will be root of 36, and root of 36 is nothing but plus or minus 6 is equals to y plus 3. So y plus 3 is equals to 6 or y plus 3 is equals to minus 6. Right. There can be two possibilities. So y can be equal to 6 minus 3, that is y can be equals to 3, or y can be equals to minus 6 minus 3, that is y can be equal to minus 9. Okay. So the value of y can be 3 or minus 9. Okay. So you all can take a note of this question or take a screenshot. Okay. So that's all for question number 8. Let's go for question number 9. Okay. So question number 9 करते हैं बच्चों. Question number 9. Question number 9 क्या कह रहा है? If Q is equidistant from P and R, find the value of x. So एक पॉइंट Q दिया हुआ है हमें जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1 और ऐसा कहा गया है कि ये जो पॉइंट Q है 0,1, this point Q is equidistant from point P, that is 5, -3, and point R, that is x, 6. You have to find the value of x. सिंपल है बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है. इक्विडिस्टेंस मतलब हमें दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस लेना है. सो लेट मी राइट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P, तो एक पॉइंट Q है जो कि आपका है 0,1. ठीक है. दिस पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P. What is P? 5, -3 and Q.
sorry r that is x comma 6. So this point q is equidistant from p as well as r, okay, and you need to find the value of x first. So according to the condition given in the question, q जो है वो p से और q जो है वो r से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए जो pq का डिस्टेंस होगा बच्चों वही आपका rq का डिस्टेंस होगा, जो आपका pq का डिस्टेंस होगा वही आपका rq का डिस्टेंस होगा. So if you want to find the distance of pq, so it is under root x2 minus x1. So x2 minus x1, इसको हम लेते हैं x1 y1, इसको लेते हैं x2 y2, ओके बच्चों. So x2 minus x1 that is 0 minus 5 whole square plus 1 minus minus 3 whole square is equal to rq, r and q. So that will be equal to under root x2 minus x1. अब बच्चों इसको हम लेते हैं x1 y1, so you will get x2 minus x1 that is 0 minus x whole square plus 1 minus 6 whole square, ठीक है. So minus 5 whole square plus 4 square is equal to 0 minus x that is minus x square plus minus 5 square, ठीक है. Now 25 plus 16 is equal to under root x square plus 25. Okay. Now you take square on both the side. Square on both the side. So if you take square on both the sides, square and root will get cancelled. Here we will get 25 plus 16. That is 5 plus 6 is 11. Carry 1. 2 plus 1 3. 41. 41 is equals to x square plus 25. ठीक है. 41 is equal to x square plus 25. So here you will get x square is equals to 41 minus 25. X square will be equal to 41 में से 25 minus करो. 11 minus 5 6 and 3 minus 2 1. X square you are getting 16. So x will be plus or minus 4. x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों प्लस और माइनस 4. ओके. सो इतना आप नोट डाउन करो, आगे का पार्ट हम करते हैं अभी. ओके. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ r, हमें r के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे? r के बच्चों दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे. एक मिलेगा हमें 4,6 और दूसरा मिलेगा r का कोऑर्डिनेट -4,6. These are the two coordinates. r is 4,6 and r is -4,6. ठीक है. ये हमें x की वैल्यू मिल गई. नेक्स्ट पार्ट इज you need to find distance QR and PR. ठीक है. So QR will be equal to under root, इसको अपन x1 y1 मान लेते हैं. ठीक है. So distance between QR will be x2 minus x1 that is 0 minus 4 whole square plus 1 minus 6 whole square. ठीक है. तो 0 minus 4 is minus 4 square plus 1 minus 6 is minus 5 square. So under root 16 plus 25 that is equal to 6 plus 5 is 11. 11 का 1 carry 1. Okay. 2 plus 1 3 plus 1 41. So QR is 41. QR is under root 41. Right. ये आपको QR की वैल्यू मिल गई. QR and PR. अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास QR के दो कोऑर्डिनेट हैं. एक है हमारा 4,6 और दूसरा है -4,6. तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट का यूज करके डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. सो पहले तो मैंने 4/6 यूज किया है. नाउ आई एम यूजिंग अनदर कोऑर्डिनेट दैट इज -4,6. सो अंडर रूट x2 minus x1 -4 minus 0 plus 6 minus 1 whole square that is equal to under root -4 whole square plus 6 minus 1 is 5 square. That is 16 plus 25 that is equal to under root 41. QR is under root 41. Okay. So दोनों टाइम पे हमें डिस्टेंस सेम मिल रहा है.
Now we have to find the distance PR. PR परमानेंट रेसिडेंस. चलिए PR की डिस्टेंस फाइंड करते हैं. तो PR का क्या होगा? अंडर रूट, अपन इसको x2 और y2 ले लेते हैं. सो x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो 5 माइनस 4 दैट इज 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है. माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 और माइनस 9 का स्क्वायर 81. ठीक है, सो दैट इज अंडर रूट 82. ठीक है बच्चों, तो ये हमें पीआर की डिस्टेंस मिल गई. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. So last question of the exercise, question number 10. The question says that find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3 comma 6 and minus 3 comma 4. तो बच्चों यहाँ पे हमें दो पॉइंट दिए हैं 3 comma 6 और minus 3 comma 4 और हमारा एक पॉइंट है x comma y जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है. ठीक है, तो हमें x और y के बीच में एक रिलेशन बतानी है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट द पॉइंट P be x comma y which is equidistant from the point 3 comma 6 that is q, 3 comma 6 q and p q r that is minus 3 comma 4. ठीक है, so the point P is equidistant from q and r. So we have to establish the relation between them. So PQ will be equal to PQ will be equal to PR. PQ will be equal to PR. So if you want to find the distance between PQ, it will be under root x2 minus x1 that is 3 minus x whole square plus 3 minus x whole square plus 6 minus y whole square is equal to what is the distance between PR? The distance between PR will be minus 3 minus x whole square plus 4 minus y whole square. ठीक है, माइनस 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. ठीक है बच्चों, अब सिंपली जैसे कि हम हर स्टेप में करते हैं, आपको यहाँ पे अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट है सो यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड. सो इफ यू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड इट विल बी अंडर रूट निकल जाएगा आपका. यहाँ पे बचेगा 3 माइनस x होल स्क्वायर plus 6 minus y whole square will be equal to minus 3 minus x whole square plus 4 minus y whole square. ठीक है, now 3 minus x whole square, so here we will get 9 minus 6x plus x square plus 36 minus 12y plus y square is equal to 9 minus 6x plus x square is equal to 36 minus 12y plus y square is equal to 3 square 9 plus 6x plus x square plus 16 minus 8y plus y square. ठीक है, अच्छा 9 minus 6x plus x square plus 36 minus 12y plus y square is equal to 9 plus 3 to the 6x plus x square is equal to 16 4 to the 8y plus y square. Okay, now देखो यहाँ पे x square और y square cancel, x square और y square cancel. Here we will get 36 plus 9 that is 45. It's not 45, it's 45. So 36 plus 9 is 45 minus 6x minus 12y is equal to 16 plus 9 is 25 plus 6x minus 8y. ठीक है, okay. Now bring all of them on one side. ठीक है, so 45 minus 6x minus 12y minus 25 minus 6x plus 8y is equal to 0. 45 minus 6x minus 12y minus 25 minus 6x plus 8y. ठीक है, so 6x minus 6x that is minus 12x minus 12y plus 8y. So 8 minus 12 is minus 4y. Minus minus plus 8 minus 4 is minus 4 plus 45 is equals to 0. Plus 45 is equal to 0. Now 45 कैसे ये
minus 12x minus 4y and 45 minus 25 that will be 20. ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने x वाले लाइक टर्म को लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 12 इज माइनस 4y और आपका हो गया 45 minus 25 that is 20. Okay, now you need to divide the entire equation with 4. ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा minus 3x minus y plus 4 5 are 20. ठीक है, now multiply with x, multiply with minus, so you will get 3x plus y minus 5 is equals to 0. So this is the relation between x and y for the given coordinates. 3x plus y minus 4 is equals to 0. So students, with this question we have completed this exercise. I hope you all are enjoying the content of this channel. I welcome your all suggestions. You can give your suggestions in the comment section. Okay, and please share to your peers, your group.